It's a holy news break from Bihar, where top sources have told Times Now that there could be a Rajya Sabha entry for Nitish Kumar or his son. So Rajya Sabha seat likely for either Nitish Kumar or his son, and there are a lot of discussions taking place over who could go to the Rajya Sabha. So top sources telling Times Now that there could be a likely Rajya Sabha entry of Nitish Kumar, and Nitish Kumar's son might be the Deputy Chief Minister. So Nitish Kumar's son may get the post of the Deputy Chief Minister, but this means that there could be big changes in Bihar months after the elections in Bihar. Nitish Kumar could be headed to the Rajya Sabha, and there could be a likelihood of a new Chief Minister from the BJP camp. So this means that there would be a big change. Now, remember, going into the elections, the BJP had made it clear that Nitish Kumar would be the Chief Minister, and Nitish Kumar returned as the Chief Minister for a record time, after which now there are details coming in that there are discussions taking place on whether there should be a replacement. And this could come in the form of Nitish Kumar, the veteran leader, going to the Rajya Sabha, and his son getting the Deputy Chief Minister's post. So JDU will get the Deputy Chief Minister's post, and the Chief Minister will be from the BJP camp. Now this could indicate a big shake-up in the politics of Bihar. Indications coming in that there could be a change, with Nitish Kumar likely to go to the Rajya Sabha. Now remember, discussions have been going on within the BJP camp on the nominations for the Rajya Sabha, but any change in Bihar would actually mean that this would be an end of an era in Bihar, with Nitish Kumar going to the Rajya Sabha and a new Chief Minister coming in from the BJP camp. So it is a big indication. This change could mean a huge change in Bihar. As of now, sources indicating that these discussions are going on. Now remember, the BJP will also be taking the JDU into confidence. So discussions are now ongoing with the JDU as well on what could be the next step. And as of now, there are indications coming in that the new Chief Minister in Bihar could be from the BJP. Now this could be for the very first time that we could be seeing a BJP Chief Minister in the state. Nitish Kumar is likely to step down from the helm, and he is likely to go to the Rajya Sabha. And instead, it is his son, Nitish Kumar's son, who will take over, but as the Deputy Chief Minister of the state. We are awaiting more details of the discussions that have been ongoing. Currently, within the BJP camp, there are discussions on the steps that can be taken, but this would mean a big change in Bihar. Getting more information coming in from our reporters as well to get details on the scoop and the discussions that are taking place in the BJP camp. Currently, discussions have been ongoing, but this would also mean that the power equations in Bihar are also going to change. My colleague Ravikant is joining us on the broadcast with the details. And Ravikant, this could mean a big change in Bihar. What are the details of the discussions? देखिए, बिहार की सियासत से ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और जो सूत्र इंडिकेट कर रहे हैं उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में जो नेगोशिएशन है वो लंबे समय से चल रहा था, और अब फाइनल इस बात को लेकर सहमति बनी है कि जो नीतीश कुमार के बेटे हैं उनको वहां पर डेप्यूटी सीएम का पद दिया जाएगा। पहले चर्चा इस बात को लेकर चल रही थी कि उनको जेडीयू ज्वाइन करके उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन थोड़ा बदलाव हुआ है। अब नीतीश कुमार ही, उनके पिता जो हैं, यानी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, और जो सीएम कोटा लंबे समय से जेडीयू के पास था, अब वो सीएम कोटा भारतीय जनता पार्टी के पास आएगा। यानी जो बिहार का मुख्यमंत्री होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, और नीतीश कुमार के बेटे को वहां पर एकोमोडेट किया जाएगा डेप्यूटी सीएम बनाकर। और 5 तारीख नॉमिनेशन की लास्ट डेट है। बीजेपी ने अपने कैंडिडेट के नाम अनाउंस कर दिए हैं, और उम्मीद की जा रही है कि शाम 4 से 5 बजे के बीच में ये सारा का सारा नेगोशिएशन जो है वो फाइनल स्टेज में चला जाएगा। कल नामांकन की आखिरी डेट है, और आज जेडीयू भी अपने कैंडिडेटों के नाम का ऐलान कर देगी। तो ये बड़ी खबर है बिहार की सियासत से। वहां पर चेंज ऑफ गार्ड की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं, और बीजेपी की कोटे से मुख्यमंत्री बनने के आसार प्रबल दिखाई दे रहे हैं। Okay, so Ravikant, that would mean the heralding of a new era in Bihar as well. Any indications coming in on any names being discussed in the BJP?
देखिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी में कोई भी मुख्यमंत्री होता है, उसके लिए प्रॉपर विधायक दल की बैठक और यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है। अभी कौन से नाम पर विचार होगा, ये नाम फाइनल नहीं है, लेकिन कुछ फ्रंट रनर हैं जो जिनके नाम हम कयास लगाए। सम्राट चौधरी का भी एक नाम है, क्योंकि ऑलरेडी वो वहां के गृह मंत्रालय और डिप्टी सीएम का पद संभाल रहे हैं। तो एक प्रबल दावेदार के रूप में वो सामने है, लेकिन ये फाइनल नहीं है, क्योंकि जब भी किसी राज्य में मुख्यमंत्री तय होता है तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक और विधायक दल की वहां बैठक बुलाकर उसे चूज किया जाता है। जी बिल्कुल, और बीजेपी की तरफ से देयर हैव बीन मेनी इंस्टेंसेस व्हेन देयर हैव बीन सरप्राइजेस एज वेल, स्पेशली इन पिकिंग अ नेम फॉर द टॉप पोस्ट, isn't it? So we don't know yet on the discussions that are taking place, but any information that you're also picking up, Ravikant, from the JDU camp on what are their demands? You spoke about Rajya Sabha entry of Nitish Kumar, but also his son who will be elevated to the post of Deputy Chief Minister. Ravikant? Okay, all right. We don't have Ravikant with us, but this is big information now coming in. This could be a massive change in Bihar. Broken for some times now. Nitish Kumar's son might be the Deputy Chief Minister, with a new Chief Minister likely from the BJP, with Nitish Kumar being sent to the Rajya Sabha. Now, tomorrow, as Ravikant was pointing out, is the last day for the nominations. We have Mr. Sunil Singh on the broadcast with us. Thank you for joining us. Sunil Singh ji, from the JDU, there are indications coming in, sources saying Nitish Kumar ji could go to the Rajya Sabha. Actually, the supreme leaders of the various coalition parties in NDA are discussing things. But till it is announced, we don't know. But yes, if this thing happens, the Nishant ji joins the cabinet, I think with a youth as a youth leader. We are also, they will be welcome to everything, but then it's not announced yet. Let's see what our supreme leaders decide. तो क्या ये discussions हो रही हैं कई दिनों से, सुनील सिंह जी? जो भी होंगी वो प्रेस में तो नहीं आएंगी ना। ये चीजें लोग एनडीए के घटक दल के शीर्ष नेतृत्व आपस में लगातार विमर्श कर रहे हैं कि उनके राज्यसभा के कौन कैंडिडेट होंगे, और ऐसा है कि पांचों का पांचों सीट एनडीए के खाते में कैसे आए, इस पर मंथन जारी है। और जहां तक आपने जिस बात को की है, जब तक ये अनाउंस नहीं हो जाता है तब तक इस पर तो कुछ नहीं करना। लेकिन हाँ, अगर निशांत जी सक्रिय राजनीति में आते हैं तो एक युवा सोच के साथ, जिनके पिताजी सुशासन बाबू हैं, विकास पुरुष हैं, तो उनसे निश्चित ही उनके पास शासन के गुर होंगे और वो एक अच्छा नेता साबित होंगे। Okay, all right. Sunil Singh ji, thank you for joining us on the broadcast. So discussions ongoing, but an official word on this awaited. Big change likely in Bihar. With that, it's time for us to slip into a very short break here. We'll be right back. Stay with us.